Hello class, human being, hello, am I audible? Good afternoon. Very good. I was late 2 days and now I see that my students are also late. Right. So can we discuss Manvi? हमने क्या क्या पढ़ा कल? Can you recall that? Minu? Sir, I was not there in last class, sir. Oh, you are absent. Yes, sir. अच्छा वीडियो देख लीजिए, right? नहीं तो Yes, I will go through the lecture, sir. you have gone already? No, sir, it is still pending from Plutus side, sir. Okay, so do it first, huh? Yes, sir. Priya, what we have discussed so far, the कल क्या बात किया? So परसों की बात नहीं, कल की बात. What we have studied so far yesterday. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. So we have discussed that war is inevitable or not. A question was there, and there we have discussed in the yes side, somewhere in yes side and somewhere in no. In that case, or in earlier also, we have discussed the organizations, that is multilateral organization, trilateral organizations, as well as bilateral organizations. In case of bilateral organizations, we have examples. The bilateral organizations are those organizations in which the two countries are there. In that's bilateral negotiation we can call it. Oh, yes, Bilateral agreement, bilateral negotiation. Yeah. Yes, sir. Like we can take example of between India and Russia, between India and Pak, and thereafter the trilateral organizations. So in case of trilateral organization, we have taken example of NAFTA, I think, between the US, Mexico and Canada, and also the IMT between India, Myanmar and Thailand, and thereafter the multilateral organizations. So in this we have taken example of the various like UN is a one organization in that, and after that the regional organizations. So in case of regional organizations, we have taken example of EU, BIMSTEC, SAG, etc. After that, the question that was there. So in case of yes, it was various international laws that are there in which the war, we can say the war can be inevitable. So after that, the international organizations, the formation of international organizations that are there. After that, the collective securities. And after that, the various thinkers which has come up, and in this case, you can talk about the Woodrow Wilson, Immanuel Kant, Montesquieu, come up with the doctrine of separation of power, and Woodrow Wilson, who gave the idea of the public administration, father of public administration, and बेसिकली आपको बताया दो चीज बताया मैंने आप थोड़ा सा मैं आपको इंटरव्यू करूंगा राइट यार आप बहुत अच्छे से यू आर आर्टिकुलेटिंग इंसिडेंट्स राइट बट मैं एक फ्रेमवर्क में बनाया एक तो आपको बताया कि व्हाट इज आईआईएस एक क्वेश्चन का आंसर बताया व्हाट इज आईआईएस राइट सो आईआईएस इज पॉलिटिक्स अमंग नेशंस राइट and that politics is not in isolation. There are multilateral organizations, there are bilateral talk, there are regional organizations, there are world trade, world institutions.
फाइन किया. सो इस कॉन्टेक्स्ट में बताना था कि इंटरनेशनल रिलेशन है क्या. इंटरनेशनल रिलेशन है एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कैसे रिलेशन बना के रखता है, राइट? यस सर. हाँ, तो ये रिलेशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, राइट? Sometimes it is bilateral, sometimes it is multilateral, sometimes it is trilateral, right? And we study different themes in international relation, like war and peace, like imperialism and nationalism, like climate change, like international organizations, poverty and inequality, also wealth, right? और जो मैंने बताया आपको आईआर में, देयर आर टू वार के बारे में, इतना वार के बारे में डिस्कस किया, तो हमने आपको ये बताया कि is war inevitable or not. So there are two groups, as you are rightly pointed out. So मैंने कहा कि okay, there were yes group, yes, yeah, war can be prevented, and there are two group, another group that is no, right? So no group is called realist. This is called realist perspective of IR, right? Pragmatist, yes, pragmatist, right? And the yes group is called idealist, or you can call liberal idealist. Proposed by Woodrow Wilson, right? So they are liberals. The liberals think that yes, war can be preventable, right? How war can be preventable? War can be prevented through international organization like UN, as we have today, and also through international law. If each country will, accept international law, and if they will respect everyone, then we can prevent war, and we can seek collaboration, cooperation, right, and coordination among nation states for what? For peace, stability, and security that we want, right? Also, we can ensure stability, progress, that is development. Okay, Priya? क्लियर? ये पर्सपेक्टिव में पढ़ा रहे हैं. दो ग्रुप थे. या यस प्रिंस, कल हमने क्या क्या बात किया? What we have discussed yesterday. हाँ. Yes sir. First we have sir IR international relationship के आपने मतलब उसका एक शिक्षा बताया कि इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, और जो अभी आपने डिस्क्राइब किया कैन बी अवॉइड वॉर, इसमें सर आपने दो पॉइंट्स दिए यस और नो, जिसके अंदर आपने इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और लॉ में पावर और सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें डिस्कस करी. देन सर आपने नेशन स्टेट डिस्कस किया, और फिर इमेज ऑफ नेशन स्टेट डिस्कस किया सर. उसके अंदर आपने 5-6 पॉइंट लिखवाए थे. हाँ जी सर. बाकी आप आज आप Very good. Harini, can you elaborate a little more? Yeah. Yes, sir. International relation. Yesterday we had defined international relation as the politics amongst nations, and it is the practice of politics amongst nations cannot be learnt in isolation, sir. So it involves both the state actors, the non-state actors. The non-state actors can be in the form of yes, sir, the organizations. They can be both terror organization, non-terror organizations, or it can even be transnational actors, like that of Walmart, Amazon, and Google, rest of the platforms who provide services across various countries, or it can be the world organizations such as the UNO or NATO, which plays a very important role, sir. And we have seen that international relationship can be based on various parties or organization amongst the parties, and based on it we have divided it into trilateral, multilateral, bilateral relations. So in case of bilateral, it is between two countries, say Indo-Pak relations or Indo-China relations can be considered one of the bilateral relations. So in trilateral,
we are having in case of IMT or in case of NAFTA, sir, NAFTA 2.0 of Mexico, or we have seen it's a tripartite agreement and it was renamed in 2017, sir, during the Donald Trump's administration. And we had seen that after this, we had also seen about certain regional organizations, and we saw that regional organizations can be a subset of multilateral organizations. That is, some of the multilateral organizations could also be a regional organization, but all regional organizations are not multilateral organizations. For example, the multilateral organizations like SARC, BIMSTEC, or ASEAN are regional. SARC, BIMSTEC, ASEAN are examples of regional organization or GCC. So these organizations occur in a particular region and a particular area or a locations. But in case of certain organizations like Quad, it does not have any regional entity to it, but it involves the different nations who come together for a multilateral purposes. So that is to join for alliances. Then we had seen that from the history onwards, international relationships always involve two entities. One is war, the other is peace, and war is inevitable is one of the stance, and other school of thought is war can be avoided. So, and war is generally fought for either due to because there is anarchy or absence of any relationship structures in the international levels. There is always a need for war or power dominance in each cases, and only the period we can say that it is never a peaceful period. It's just a truce that occurs during the diplomatic deterrence that occurs before wars, and this occurs due to insecurity amongst the nation, and every nation wants to dominate the international platform or want to increase its powers. So we have seen even during the World War II, the countries were divided into two powers. One is the Allies, the other side we have the Axis powers, and these were fought. And during this era, we have seen during the Versailles Treaty or the Paris Peace Treaty, there were two groups who were organized. One said that the agreement can occur to an extent we can avoid war. The other, these groups were called as the idealist group or the liberal group. These were based on the liberal ideologies. So the other was a pragmatic group. In case of the idealistic group, they believe that by through an international agreement, if all the organizations all the players come together and they are able to abide by the rules of the agreement, then we will be able to create a peaceful region in the international arena. Apart from it, we had also discussed about the collective security. That is, suppose 10 or 15 nations. If suppose 10 or 15, 10 or 15 nations come to very good. I'm very happy. We are really articulated पूरी क्लास ने किसी ने भी बोलना कि पूरी क्लास ही आपने बता दी. बहुत अच्छी बात है. I'm so happy कि yes, anyone who wants to share more, but apart from Hari, otherwise no other lecture I can't tolerate another lecture. Any yes, Firoz. Yes, sir. Good afternoon, Yeah. sir. Yeah. Sir, as most of the things have been covered by Arjuni, sir. Sir, apart from all this, we also discussed about this emergence of a nation, sir. How the idea of sovereignty come. Yes, sir. Earlier there were tiny city-state systems, sir, like this Greek city-state, sir. Until 16th century, there was this dynasty empire system. Right. Yes, sir. Then there were 30 years war in Europe, sir, which resulted in Westphalian Treaty in the 1648, sir. And after this treaty, the idea of sovereignty emerged, sir. It established two basic principles in international politics, sir. The first one was non-interference, and second one was all nation states are equal. Yes, sir. And in the post-Westphalian Treaty, many powers emerged in Europe, sir, like Britain, France, Sweden, Spain, and Russia. And later, Prussia also emerged as a great power, sir. And there were several wars among the states of Europe, and which resulted in them making alliance and counter alliances, sir. From 1815 to 1914, Britain established an empire, sir, Pax Britannica.
And Britain has established more than they have established their colony in more than 53 territories, sir, over 5 continents of the world. Very good, Firoz. Anyone more कि थोड़ा सा और कुछ लाइक डालना है? Come forward, voluntarily. Come forward voluntarily. Okay, so there are 3 questions I have put for you. I have given to you. You have to just write an answer and send it to me. What is international relation? Basic question. देखिए, जब तक फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तब तक मैं अगर हवा में बात करूंगा, एक पर्सपेक्टिव आपके पास आ गया है कि हम कुछ भी पूछेंगे, ओके, अगर आप लिखेंगे तो आप रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं, आप आइडियलिस्ट लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हैं, राइट? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन एंड व्हाई डू वी स्टडी इट, राइट? सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन realist perspective of IAS, right? And तीसरा है discuss the idealist liberal या slash idealist लिखिए या liberal लिखिए, दोनों एक ही होता है, एक ही बात है. 150 words here, 150 words. I don't want more words, right? So थोड़ा सा और मैं डिटेल बता दूं. Realist and idealist perspective IR मैंने बता दिया. What is IR? Detail में and Helene is articulated very well, right? So थोड़ा सा realist perspective और थोड़ा सा idealist perspective थोड़ा और बता देता हूँ, so that कि जब हम international organization भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पता है आपको, अगर आइडिया पता है ना, अगर आइडिया पता है कि क्या खींच के ला, लेंस पता है आपको, तो देखने में आसानी नहीं होगी. नहीं तो रटना दूसरे बात होगी कि आप कितना रट सकते हैं, बट सब नहीं रट सकते, right? So let me tell you about the realist perspective of IAS. थोड़ा सा ज़्यादा हो. Okay, so थोड़ा बता देता हूँ और थोड़ा आप जानते हैं, थोड़ा सा और बताना है मुझे, राइट? अच्छा, आप कितना जानते हैं रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ IAS? बहुत लोगों ने थोड़ा थोड़ा बताया है, हरिंद्र ने बताया है, फिरोज ने थोड़ा सा कंपोनेंट बताया है. देखिए रियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है, कोई बताएगा? बिल्कुल, कैन यू टेल मी व्हाट इज रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? Sir, realistic perspective, sir, in which a group they say war is inevitable. War can be वो उसको टाला जा सकता है through the international organization and collective security. नहीं टाला जा सकता है. नहीं टाला जा सकता है. Okay, sir. और बस सर इतना ही मालूम है मेरे को. इतनी मालूम? ओह माय गॉड. अच्छा, कोई और बताएगा? इंटरनेशनल रियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? जब फिर क्वेश्चन आएगा, ये 2 मेजर पर्सपेक्टिव है जो आपको पढ़नी है, अदरवाइज 10 थ्योरी है, नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सिंपल 2 थ्योरी पढ़ाऊंगा, बड़ा ही मजेदार थ्योरी है. कोई और बताएगा? प्रिया, कैन यू पुट सम लाइट ऑन व्हाट इज रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? Okay, sir. So, realist perspective, it said that the war can't be inevitable, and they have, it is a kind of pragmatic perspective which thought of a practical sense. In this, they have explained that the power that in case of realistic perspective, the power is required in case of international relation. For the survival, the country should have a certain amount of power to fight with another. After that, the security. For the security purpose, they have also explained that the security should be there of a country. In this case, we have various thinkers like the Kautilya, in which the Kautilya has explained the idea of spies, the Kutil Niti, in which in his book he has explained that Arth Shastra, that the Kutil Niti or the formation of spies, which plays an important role for the building formation of an empire. That is, after that they have the
I'm not Morgenthau, yeah. Morgenthau, in which he has explained the idea that struggle for power and peace. That is, the countries that are there, they struggle for the power, so that, because in case of, if you don't have power, other country can dominate you, like we saw in case of World War II. If you are a powerful country, the another country can't, we can say, dominate you. Like the Westphalia Treaty. In Westphalia Treaty, it has explained that there should be a sovereignty. But before that, it was a power and peace that we saw. That is the domination idea of domination, or a Matsyana idea of Kautilya, in which the bigger fish will eat the smaller fish if they have a power. Sir. After that, the eighth car has also explained, or the Waltz has also explained, the idea of the pragmatic or the practical sense, that the country should emerge with some sense of power, so that they should be able to save the sovereignty of the country, or the territorial boundary of the country. Sir. Very. लिखिए, अब मैं लिखाता हूँ. लिखिए. For realist, लिखिए, 5-7 लाइन में लिखाऊंगा. लिखिए. आप जानते हैं, for realist, international relation or international politics is nothing but only struggle for power. For realists, international politics is nothing but only struggle for power. International politics is nothing only for struggle for power. Why power? Why struggle for power? Because, थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूं चलेगा, बट अदरवाइज आई डोंट वांट टू यूज, बिकॉज वो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट? और आप लोग लिखते ही होंगे नोट्स में ना, बट एग्जाम में मत लिखना. हाँ, ओके. बिकॉज why power? Because nation wants security. Nation wants security. And survival in the international system. Because nation wants security and survival in the international system. How can we secure survival? Survival. How can we ensure security? How can we ensure survival and security? Security only by acquiring power. Only by acquiring power. Therefore, it is prime motive for the statesman man. Therefore, it is a prime motive for the statesman, or it is the first law of international relation. Law of international relation.
acquire power. इतना क्लियर है? International relation is nothing, या सिंपल कह सकते हैं, international national politics is struggle for power. Why struggle for power? Because nation wants security and survival. Right? Why they want security and survival? Because international system is anarchical. There is anarchy. There is no central authority which can ensure protection. So the nation state should acquire power, right, in order to ensure security and survival. इतना क्लियर है? मुझे बताइए. अब कल पूछूंगा तो कल इधर उधर मत होना, right? So इसीलिए a statesman must acquire power. This is the first law of international relations, right? It is a raison d'etat. It is a rationality to acquire power, right? National interest, लिखिए. According to, देखिए सबको लिख रहे हैं ना आप लोग या नहीं लिख रहे हैं? लिख लीजिए पहले, इसको लिख लीजिए. ऊपर जो मैंने लिखा है ना वो लिखिए. आपने नहीं लिखा तो लिखिए. अगर लिख लिया तो अच्छी बात है. मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा थोड़ा. देन सबने लिख लिया. मीनू, पिया, हरिणी, फिरोज. Everyone should write. Right? Now, according to realists, national interest should be defined in terms of power. मुझे कौन सी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट है जो पावर से अलग है, मुझे बता दीजिए. Right? According to realists, national interest should be defined in terms of power. Done? लिखने के बाद आप डन लिख दीजिए. डन या डी लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने लिख लिया. अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए. तो एक कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नेशन स्टेट. व्हाई पावर? बिकॉज एवरी नेशन स्टेट वांट्स सिक्योरिटी. Right? So every state have their security dilemma. कि मैं secure रहूंगा कि नहीं रहूंगा कल को जाकर. Right? Security की major concern, आपने अगर internal security पढ़ रहे होंगे, security की major concern, it's not only for nation state but also for individual. Right? Am I right? आप लोग भी insecurity dilemma में होंगे कि UPSC होगा कि नहीं होगा. ये दिमाग में जरूर चलता होगा. आप लोग भी, क्योंकि UPSC is not your friend, it is not your friend, right? You are at war with UPSC and you have to acquire power. How can you acquire power? कैसे acquire कर सकते हो बताओ? I'm talking about you. People, proper strategy and hard work. इतना ही आंसर आया? अरे आंसर तो बताओ यार. तुम लोग फील नहीं करते इनसिक्योरिटी डायलेमा नहीं होती है या होती है? Is there any insecurity dilemma inside you?
in relation to UPSC or not? You are secure properly? Yes, I'll get through it. चलिए हम realist perspective देखते हैं. According to realist, national interest should be defined in terms of power, right? तो ये दूसरा मेजर पॉइंट है. तीसरा मेजर जो पॉइंट है देखिए, as per realist, international relation is reflection of human nature. Right? Like कल बताया था मैंने, like in society, man wants to dominate and subjugate man. One nation wants to subjugate other, The third point. Done? मुझे तो बताइएगा. ये कल मैंने बताया था ये पॉइंट. देखिए, fourth point देखिए, there is no relation between morality and politics. There is no relation between morality and politics. Politics has its own morality, has its own morality. That is to acquire power. एक ही है पावर गेन करने का. Clear? Acquire more and more power. Right? Any confusion till now? Minu, it's okay. कोई confusion तो नहीं है. मैं actually ज़्यादा अंग्रेजी तो नहीं बोल रहा हूँ. So tell me, I'll be bilingual. No, sir, it's okay. No, it's okay. Fine. बहुत अच्छी बात. कभी-कभी हो जाता है कि वो फ्लो पकड़ हमें आ जाती है, फिर वो चला जाता है. कभी-कभी हिंदी ज़्यादा हो जाती है. Done? चलिए, next बताते हैं. It is necessary for nation state to ensure security and other method of security
other method of security is to make alliance, self-help. सेल्फ-हेल्प का क्या मतलब है यहाँ पर? Other method of security, ensure security is to make alliance and self-help. Self-help का क्या मतलब है यहाँ पर? कुछ नहीं, self-help means अपने आप आपको मिलिट्री बढ़ाना है, अपने आप आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है, अपने आप yes आप empower yourself, right? Yes. So हर दिन और रात आपको मेहनत करना है कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकें, राइट? चलिए अब मेजर एक्सपोनेंट लिख लीजिए। मेजर एक्सपोनेंट कौन कौन है जो ये बोले हैं? देखिए कौटिल्य, Thucydides, yeah, Machiavelli, Hobbes, Morgenthau. मेजर एक्सपोनेंट ये है। क्लियर? चलिए बेसिकली ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ ताकि आगे क्लियर, बिल्कुल क्लियर रहे। क्लियर है? Sir, please pronounce the name again, sir. कौटिल्य, Thucydides, जिसने किताब लिखी थी प्रोपोगेशन हुआ। कौटिल्य का किताब का नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने मंडल थ्योरी दी थी, राइट? मैकियावेली, हॉब्स, मॉर्गेनथॉ, ये मेजर एक्सपोनेंट थे। एक लाइन और लिखिए। Realists believe that there is anarchy in the international system. वाल्ज अभी आएंगे बिल्कुल प्रिंस। अभी वाल्ज रियलिस्ट में नहीं पढ़ते, वो न्यू रियलिस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताऊंगा, इसीलिए आप वाल्ज का नाम मत लिखना। कल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था, इसीलिए थोड़ा सा वाल्ज किसी ने बोला तो मैंने बोल दिया हाँ ठीक है, वो अपडेटेड वर्जन है उसका। Realist believes that there is anarchy in international system. Okay, so what do you mean by anarchy? Anyone in the international system? Yeah. Lawlessness, there is no ruler. Very good. There is no overarching authority, right? Who can enforce law, right? For example, स्टेट में लॉ इन्फोर्स करने के लिए पुलिस होता है, मिलिट्री होता है, बट इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा वर्ल्ड गवर्नमेंट टाइप का नहीं है, इसीलिए अनार्की है, लॉलेसनेस है। क्लियर? ओके। They think that
nation state is a prime actor in the international relation. वो सोचते हैं कि नेशन एक्टर जो है इज अ प्राइम एक्टर इन द इंटरनेशनल रिलेशन। ये आपको पहला लाइन लिखना है, ये दोनों लाइन पता है। एक्सपोनेंट से आप पावर से पहले भी अगर दो लाइन लिख सकते हैं या पावर के आसपास तो सही रहेगा। ये मैं भूल गया था, अभी याद आया था, तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना ऊपर। अब इसमें वेरिएशन है, ये लिस्ट में वेरिएशन है। हाँ सर, लास्ट पॉइंट को पावर के पास ले जाना है। हाँ, ये जो दोनों पॉइंट लिखा है ना कि वो बिलीव करते हैं कि एनार्की है इंटरनेशनल सिस्टम में, और ये कि जो नेशन स्टेट है वो प्राइम एक्टर है इंटरनेशनल रिलेशन में। इन दोनों पॉइंट को सीधा ऊपर ले जाना है। ओके सर, बिल्कुल। हाँ, एनी कंफ्यूजन? Got it? Okay. Manvi, is Manvi here? No. बिल्कुल पता चला। Yeah, got the point? Yes, स्ट्रेंथ कम है अभी तो लग रहा है मुझे, क्यों बोरिंग हो जाती है ज्यादा क्लास में। अच्छा, वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं या बोरिंग हो जाती है? प्रिया ने बोला सर बोरिंग हो जाती है थोड़ा कुछ। नो सर, आई सेड यस कि आपने पूछा इट इज क्लियर और नॉट सर। अच्छा, मुझे लगा कि बोरिंग हो जाती है। कोई बात नहीं, बोरिंग हो जाती है, यू नो, ये भी तो सच्चाई है, बोरिंग हो जाती है ना। चीजें ऐसी है कि कोई बात नहीं। चलिए, गॉट द पॉइंट। अब हम आते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन है, 2-3 वेरिएशन है, आपको एक लाइन में 2 लाइन में बता देता हूँ। रियलिज्म समझ में आ गया? रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर या रियलिज्म इन आईआर सब वही है, समझ में आ गया? तो इसके बदला है एक न्यू रियलिज्म। अब रियलिज्म क्या मानता है कि जो ह्यूमन नेचर है वही इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लेवल पे रिफ्लेक्ट होता है, राइट? ह्यूमन नास्टी है तो नेशनल स्टेट भी नास्टी है। ह्यूमन एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करना चाहता है, नेशन भी उसका रिफ्लेक्शन नेशनल स्टेट पे मिलता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को डोमिनेट करना चाहता है ना। इंटरनेशनल रिलेशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। जैसे सोसाइटी में एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करना चाहता है, वैसे ही एक नेशन दूसरे नेशन को डोमिनेट करना चाहता है, राइट? बिल्कुल सच बात है क्या एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करना चाहता है? यस सर। हाँ, यस सर, बिल्कुल सही बात है। सच्चाई है इसमें। हाँ, यस सर। या कोई डिसएग्री भी है कि नहीं ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है सर, आपने जनरलाइज कर दिया ह्यूमन नेचर? मतलब मुझे बोलो सर ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं होता। नहीं सर, ऐसा ही होता है सर। ऐसे होता है ना, सब चाहता है कि मेरा चले। हाँ यस सर। हाँ, फैमिली में चलता है कि आप तो बच्चे हो तो फैमिली में चलता है हस्बैंड वाइफ का चले, हाँ वाइफ का चलता है मेरा चले, तो हस्बैंड का चाहता है मेरा चले, राइट? किसी और। यस सर, इसी बात का तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट ही होता है सर। राइट। इवन अमंग फ्रेंड्स, हम जो दोस्त होते हैं ना उसमें भी हायरार्की होती है। बहुत प्यार होता है हमें, बट उसमें भी हायरार्की होती है, एक या दो का चलता है। यस प्लीज बोलिए सर। जब 2 मिल जाते हैं तो एक की धज्जियां उड़ा देते हैं। सर हाँ, मैं वही कह रहा था सर, जो ये आपको पॉइंट है ना, इस पे ना वो एक राइटर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक चीज कही थी, पावर मेक्स यू करप्ट एंड मोर पावर मेक्स यू मोर करप्ट। यस सर, तो वही वाला सीन है सर। ह्यूमन नेचर तो ठीक है,
जब तक ठीक है सर, जब तक उसके हाथ में पावर नहीं सर है। ये बात जहां उसके एंथनी हाथ गिडेंस में ने पावर आ गई, जहां एंथनी उसके गिडेंस हाथ ने में पावर आ गई, यस सर power corrupts, absolutely power corrupts, absolutely. absolute power corrupts, absolutely. Great सर sociologist, आप, हाँ? हाँ Yes हाँ sir. जी सर, तो आप इस चीज को देखिए ना, तो ये रियली में है सर। हम अगर हम एक अपने स्टैंडर्ड के इंसान के साथ रहेंगे ना, तो हम दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन हम ऊपर हो जाएंगे, वो नीचे हो जाएगा, तो हम सोचेंगे अब हम ऊपर है। वो जो हमारे अंदर जो ईगो आ गई, जो पावर आ गई ना, वो सब ये सब चीजें क्रिएट करती है। तो ह्यूमन नेचर का आई थिंक सो रियलिज्म में यही फर्क पड़ता होगा कि वो देखने का नजरिया बदल जाता है। राइट, चीजों ये देखने का एक नजरिया है, ऑफ कोर्स। ये हम क्या बता रहे हैं कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है आईआर को देखने का। राइट, थिंकर मानते हैं कि वार बहुत जरूरी है, पावर बहुत जरूरी है। पावर क्यों जरूरी है? क्योंकि इनसिक्योरिटी है। राइट, चलिए, जो रियलिस्ट को बताया मैंने कि ये ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है। न्यू रियलिस्ट कहता है कि देखिए, ये ह्यूमन नेचर ऐसा, ह्यूमन नेचर की बात ही नहीं है। जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल रिलेशन का, राइट, वो ऐसा है कि नेशन स्टेट ऐसे बिहेव करते हैं, अलायंस बना लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल रिलेशन का? अनार्की है यहाँ पर, और भरपूर अनार्की है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। राइट, so it's not human nature, but it is a structure of international system, which compel the nation state to seek more power for their security. It compels the nation state, right, to make an alliance. और इसको आइडिया दिया था केनेथ वाल्ज ने। आपने किसी ने केनेथ वाल्ज का नाम लिया, तो मैं इसमें आपको बता दूं कि न्यू रियलिस्ट में 2 लाइन लिख लीजिए, ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा। देखिए, देखिए, realist believes that international relation is a reflection of human nature. International politics is a reflection of human nature, whereas new realists believe that it is the structure, it is the structure of international system. It is the structure of international system which compels nation state to seek power for their security. Exponent लिख लीजिए, Kenneth Walsh. अब समझ में नहीं आया तो बताइएगा मुझे, दोनों में डिफरेंस। So, हाँ, so what is after which international system which? अच्छा, should I read it? हाँ, Yes, sir. which compels nation state to seek power for their security. Yeah, which compels nation state to seek
पावर फॉर देयर सिक्योरिटी। और एक्सपोनेंट है जो केनेथ वाच 1970 के थ्योरी है, मॉर्गन को 1950 में किताब लिख चुके थे। So it means the realism is talking about it's a human nature which is driving the international relation. It is automatically it is done due to human nature. But neorealism, realism talks about it's not about human nature. It's because of the anarchy at the international level, which pulls the states or nation states to become powerful and acquire power to make them secure. Right? Right. Very good. Yes, yes. Exactly it is. Exactly it is. अब मुझे बताओ कोई 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 दिक्कत? आप दो वेरिएशन जान गए? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब ये है एक और वेरिएंट है, बता दूं, वो कहता है कि देखिए जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ा ही स्ट्रैटेजिक रूप में बनना चाहिए, राइट? वो फॉरेन पॉलिसी में बहुत कंसंट्रेट करता है और वो कहता है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है बड़ा ही स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। Why it should be strategic? Because we want to more power after power, right? So we should make a relation in such a way that we can acquire more and more power. और इस वेरिएशन को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक रियलिज्म। कोई ज्यादा नहीं, समझ में आया? एक अलग सा पर्सपेक्टिव है एक थिंकर का, वो कहते हैं कि नेशन स्टेट इन हर फॉरेन पॉलिसी मेक ए स्ट्रैटेजी टू एक्वायर पावर। कैसे हम इंटरैक्ट करते हैं? थ्रू फॉरेन पॉलिसी करते कि नहीं? इंडिया का फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से, पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी चाइना से, चाइना का फॉरेन पॉलिसी यूएस से, यूएस का फॉरेन पॉलिसी, ऐसे ही सब फॉरेन पॉलिसी से डिपेंडेंट है। तो फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है कि आपको पावर एक्वायर करना है। समझ में आया? ये अलग वेरिएंट है, बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया। So this theory asks us to go with that of a stronger power alliance. You know, I'm unable to hear you. Yeah, can you come again? So does this strategic realism ask us to move with that of a stronger power alliance? It wherever you want, मतलब wherever it you know it may benefit you. ऐसा नहीं कि ये आपको स्ट्रॉन्गर पावर, आपको सारे पावर को मिला लेना। ऐसा है कि अगर आप सारे कंट्री को एक साथ मिला लें तो मिला लीजिए। After post-Cold War, the United States, you know, compel everyone. अगर आप मन से या मजबूरी से आप मेरे तरफ मिलिए, आप इकोनॉमी लिबरलाइज कीजिए, right? And US foreign policy, you know, made in such a way that you know it gained everywhere. Yes. Got the point? Yes, sir. लिखवा दूं या एक लाइन आप लोग लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। या क्वाड में एग्जैक्टली क्वाड में या हाउ टू टैकल चाइना, वेरी गुड मैन। सो कैन यू राइट दिस? आप लोग लिख लीजिए और एक लोग मुझे बता दीजिए क्या लिखा है आप लोग, और उसी सेंस में आप लोगों ने लिखा, रटना कोई रटनी कोई बात नहीं, तो समझे मैं लिखा दूंगा और अगर आपको समझ में आया तो आप लिखिए 2 लाइन, मात्र 2 लाइन लिखिए। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? लिखिए तो मुझे बताइएगा। फिर और एक वेरिएशन है कह के कथा समाप्त यहाँ का रियलिज्म का। फिर दूसरी जो है वो भी एक लाइन में। हाँ, प्रसाद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, एक लड्डू।
बूंदी का चाहिए या बेसन का? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खोवा का लड्डू दिलाऊंगा, खोवा का, खोए का लड्डू या नारियल का लड्डू? लिख लिया? हाँ मोटी छोड़ का बनाएंगे, लड्डू ही बनाएंगे। या anyone, please anyone spell what have you written? ओह बोलो, गलती बोलो, I'll be happy। सर मैंने लिखा शायद मेरा वाला बिल्कुल सेंस में निकलता है, नहीं? यस प्रिंस। यस सर। हाँ बोलो सर, रिपीट करना क्वेश्चन, क्या बोलना है सर? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक रियलिज्म? मुझे एक लाइन आंसर। नहीं सर, स्ट्रेटेजिक का मेरे को लगा जो आपने लिखवाया है उससे रिलेटेड आप पूछ रहे हो। नहीं सर कोई ऐसे कोई मैंने स्ट्रेटेजी कभी समझाया ना, वही बताना है आपको। नहीं सर, आई थिंक मैं रिकनेक्ट हुआ था, एक बार दोबारा बोलो फिर। ठीक है आप ये कर लो। हरिनी भी ने ऑनलाइन ये किया था, अनम्यूट करा। यस हरिनी, कैन यू कम? Yes. So strategic realism involves the foreign policies have to be organized as a strategy by any country because every country wants to acquire power after power. So every nation has to utilize its policies, foreign policies, in such a way that it uses its strategies in order to organize itself. So it can be either through one country with the other, or it can even involve the multilateral countries and bodies. For example, exactly. USA during free Quad, yeah, you can quad also. Yes. Yeah. So foreign policy, very good prayer, very good prayer. So ये समझ में आया प्रिया ने जो लिखा और हरिनी ने जो कहा। प्रिंस अब बताइए, समझ में आया? यस सर, यस। अच्छा, इसका एक्सपोनेंट कौन है? अब ये तो ये कौन कहा? बाबा रणछोड़ दास। थॉमस शेलिंग। थॉमस शेलिंग, नो थॉमस शेलिंग, थॉमस शेलिंग। क्लियर है? थॉमस शेलिंग ने कहा, एक्सपोनेंट थॉमस शेलिंग। ईएच का रियलिस्ट में आता है, ईएच का रियलिस्ट के पर्सपेक्टिव में आता है। अगर नाम मैंने नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो ईएच का। डन? क्लियर? राइट? यस। चलो अब बाबा रणछोड़ दास का दूसरा और एक वेरिएंट देखते हैं रियलिज्म का। उसको बोलते हैं, देखिए अभी तक हम क्या देख रहे थे? सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। पावर भी क्यों? एंड क्या है यहाँ पर? सिक्योरिटी। और मीन्स क्या है यहाँ पर? अभी तक हमने जो देखा है, पावर, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट, अलायंस, राइट, और काउंटर अलायंस। अभी बात कर रहे थे हम लोग क्वाड की, यही है ना कि एंड क्या है यहाँ पर? सिक्योरिटी हमारा मेन एंड है, एम है, गोल है, राइट। जैसे मान लीजिए कि आपका गोल है यूपीएससी, हम लोग एक मीन्स के रूप में काम कर रहे हैं, राइट राइट, कि हाउ टू अचीव द गोल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, अभी तक बात किया है, जितने भी वेरिएशन पढ़ा है। एक वेरिएशन कहता है कि भैया सिक्योरिटी तो दूर की छोड़ो, हमें पावर ही चाहिए, राइट। व्हाई सिक्योरिटी? बिकॉज how can you achieve security? Through power,
right? So you should get power in such a way that you must be offensive, right? डरना नहीं किसी से, right? So उसको बोलते हैं हम इस सब ये जितने भी अभी रियलिस्ट हम अगर अभी पढ़ा है हमने रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, ये जो अभी थॉमस सेलिन का पढ़ा है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, ये सबको डिफेंसिव रियलिज्म कहते हैं। ये डिफेंस चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, इस सबको कैटेगराइज करके हम डिफेंसिव रियलिज्म। लेकिन एक और महान है, उन्होंने 2000 में किताब लिखी थी, 20 साल 21 साल पहले, उन्होंने कहा कि पावर शुड बी एंड पावर शुड बी and itself. No power is sufficient. No power is sufficient. Acquired power in such a way that you can attack anyone. इसको बोलते हैं हम ऑफेंसिव। वो डिफेंसिव थे सारे, ये बड़े ऑफेंसिव बाबा आ गए कि हम तो लड़ ही लेंगे जी। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो मैकियावेली भी ऑफेंसिव रियलिस्ट था। वो कहता था कि पावर इतना ज्यादा होना चाहिए राजा के पास कि राजा ऐसा नहीं कि अपनी सुरक्षा देखे, राजा को इतनी पावर होना चाहिए कि दूसरे को भी अटैक कर सकता है आराम से। मैकियावेली भी ऑफेंसिव था। 2000 में इन्हीं दोनों से इंस्पायर होकर के एक राइटर थे, कौटिल्य भी। वो कहता था कि कोई भी राजा को पावर इसलिए एक्वायर नहीं करना चाहिए कि वो सुरक्षित रहे, ना, पावर इसलिए एक्वायर करना चाहिए कि मोर एंड मोर टेरिटरी गेन करना चाहिए, राइट? अगर आपने मंडल थ्योरी पढ़ा है तो उसमें अरि मित्र, राइट, वो 10 सर्कल बनाता है, राइट? पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं आपको, राइट? और इसके एक्सपोनेंट हैं क्या बताया मैंने, कौटिल्य, मैकियावेली, ये रखते हैं इसको, और फिर हम रखते हैं जॉन मीरसैमर। जॉन मीरसैमर का स्पेलिंग कर देख लीजिएगा, अगर आप ये समझ में आया तो हो गया डन। ये जो पावर वाले लोग हैं ना, वो पावर हंग्रेड लोग, ऐसे ही है। Sir, हाँ, sir, who wrote these lines in 2000? Who is the writer? मीरसैमर, Okay. पावर पॉलिटिक्स ऑफ ग्रेट नेशन, राइट? हाँ, Okay. मीरसैमर 2000 में उन्होंने लिखा था ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। किताब का नाम था ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। चलिए, तो ये एक ग्रुप हो गए। अब ये खत्म करके अब हम थोड़ा लिबरल्स की बात करते हैं कि वो लिबरल्स क्या पर्सपेक्टिव देखते, क्या पर्सपेक्टिव उनको दुनिया को देखने का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखने का, कैसे देखते हैं, राइट? सर सर जो ये वाला ग्रुप है ना, इनका कोई नाम है क्या? इनका है ना, मैंने बोला ऑफेंसिव रियलिज्म। या ओके सर। ऑफेंसिव, ईट देना है पकड़ के, है ना? डोंट बी डिफेंसिव, सो बी ऑफेंसिव अगेंस्ट UPSC, right? Prepare for yourself in such a way that you can crack it. कौटिल्य भी है, got the idea? Yes.
So your preparation should be also like offensive, realist, right? कैसे छोड़ देगा प्रिंस? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर हम ऐसे करेंगे तो यूपीएससी हमें छोड़ देगा? मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी आपका दुश्मन है। आप जब तक आप फतह ना कब्जा ले तब तक आप उसको ना समझे। हाँ, अलायंस कर देते ना यूपीएससी के साथ, तुम हमें कुछ दो। अलायंस तो आपने हमारे साथ किया है। आपने अलायंस तो आपने प्लूटस के साथ किया है। आप अपने आप को जीतने के लिए नहीं किया है, मुझे बताइए। हाँ जी सर, वो तो बिल्कुल है। तो फिर सर जो प्रिपरेशन में साथ देगा सबके साथ एक तरीके से अलायंस कर रखा है। अलायंस है वो आपका। यस सर, राइट। वो आपका अलायंस है। राइट। सो डन। लेट्स गो टू अनदर जो वर्जन है। बहुत ज्यादा इधर लिख दिया। चलिए नीचे चला। सीधा दूसरा। हाँ, तो जो आपने पीपीटी भिजवाई है सर, इसमें से कुछ लेना है या जो आप लिखवा रहे हैं वो काफी है? देखो मैं जो लिखवा रहा हूँ बहुत काफी है। ये मैं जब उनको पढ़ाता हूँ तो 3 क्लास में रियलिज्म ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो प्लीज उतना मत, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बट उतना डिटेल में आपको जाने की कोई जरूरत हाँ सर, एक बार रीड कर लेंगे अगर कुछ अगर पीपीटी आप रीड करना चाहें तो रीड कर लीजिए। हाँ, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यही पीपीटी जाएगी बट उतना नहीं जाना। अच्छा, लिबरल्स क्या मानते हैं? लिबरल्स पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर। अभी तक आपने क्या सीखा लास्ट क्लास में लिबरल पर्सपेक्टिव के बारे में? अभी खत्म करना है लिबरल पर्सपेक्टिव। सर ये खत्म हो जाएगा बस मेरा काम था। उसके बाद आईआर में कुछ है भी नहीं। उसके बाद इंफॉर्मेशन आईआर में। ओके, आपने कहीं भी ग्लोबलाइजेशन किया है? एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन है नहीं सिलेबस में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन? द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन? नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा। राइट, आपने नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा। नहीं आपने पढ़ा है तो मैं स्किप कर जाऊंगा। राइट, अदरवाइज है नहीं सिलेबस में। बट ग्लोबलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप ग्लोबलाइजेशन नहीं जानेंगे, राइट, कर दूंगा। ओके, आई डू इट। जब तक ग्लोबलाइजेशन आप नहीं जानिएगा तब तक पूरी दुनिया को जानने में आपको बहुत दिक्कत होगी। राइट, और ये लिबरल पर्सपेक्टिव का ही जो एक बहुत ज्यादा बड़ा एक फोकस था। अच्छा, ग्लोबल विलेज के नाम के बारे में जानता है कोई? ग्लोबल विलेज? नहीं। अच्छा, फोर्थ वर्ल्ड के बारे में? व्हाट इज फर्स्ट वर्ल्ड? फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, डू यू नो? नहीं जानते? कोई बात नहीं, नो आइडिया। अरे फर्स्ट वर्ल्ड तो जानते होगे यार। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड इज डेवलप्ड नेशन, राइट। यूएस, जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री थे, राइट। WW2 के बाद जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री थे, राइट, जिन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाया था, वेस्टर्न यूरोप, यूके, राइट, और यूएस और उनके सारे साथी। यूरोप में डेवलप्ड नेशन को हम बोलते हैं पहली दुनिया। अच्छा, दूसरी दुनिया किसको बोलते हैं? दूसरी दुनिया किसको बोलते हैं? थर्ड वर्ल्ड इज ओल्ड वर्ल्ड नेम। मैं समझा नहीं पाया। अनम्यूट करिए और बोलिए। So first is the developed nation that are there. So second maybe developing countries, and third is not sure. So then third is the Cold War era that was there, the formation of NAM that was there, sir. Non-alignment movement. No. Let me.
हम बात करेंगे ही आगे, बट लेट मी टेल यू फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड क्या है। देखिए फर्स्ट वर्ड डेवलप्ड नेशन ऑफ यूरोप एंड द यूएस, इसको बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ। हाँ, डेवलप्ड नेशन ऑफ यूरोप एंड द यूएस प्लस जापान। क्लियर? फर्स्ट वर्ड में कोई क्लियर कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट वर्ड यही है, पहली दुनिया। So, हाँ, one thing, sir. This global north is comprised of Europe and US only, plus Japan. Okay. Japan, you can yes, Japan is in the global north, रखते हैं Okay, sir. इंटरनेशनल रिलेशन, बिकॉज जापान का जो मैचिंग है वो यूके अमेरिका के साथ मैचिंग है, राइट? चाहे मिलिट्री पावर हो चाहे इकोनॉमिक पावर हो, भले ही वो जापान हार गया WW2 में, बट उसकी जो पावर थी, एक वक्त था WW, अमेरिका भी थर्राता था, और कितने साल थर्राया उसके बाद उसने अटैक किया उसके ऊपर, राइट? अच्छा, पर्ल हार्बर मूवी किसी ने देखी है? ओके, ये पर्ल हार्बर अटैक कब हुआ प्रिया? That was a naval based attack, but timing. I'll show you the importance of Japan. जापान ने रशिया को डिफीट किया था, Sir, 1945 से पहले हुआ था. I think I'm not able to recall. Yes, sir, not in 1941. And when Japan was attacked, after 4 years, अमेरिका को 4 साल लगे जापान पे अटैक करने में। जब न्यूक्लियर बम बन गया तब अटैक किया। जापान ऐसा कंट्री था जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को जीत चुका था, राइट? चाइना को चाप के रखता था, दबा के, राइट? रशिया को 1905 में ही हरा दिया था। It was the first nation, right, of Asia which competed with your country. इसलिए हम फर्स्ट वर्ल्ड में रखते हैं मेनू। till Myanmar, yes, till Myanmar। इसीलिए तो चले गए थे जो बोस साहब थे, उनके जो गुरु जी थे, वो सब चले गए थे कि वो उनको लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में ना एक्चुअली एटम जो ये था न्यूक्लियर बम वो बना और वो सेक्रेटली बना, और उनको लगा कि शायद एक्सिस पावर जीतेगा तो जापान हम इधर से ब्रिटिश को डिफीट करके भगा देंगे और हम इधर अपना इंडिपेंडेंस स्थापित करेंगे। चलिए, पहली दुनिया क्लियर है, चलिए दूसरी दुनिया बताता हूँ उसके बाद। अच्छा, चलिए दूसरी दुनिया, सोशियोलॉजी वाले अभी पूछूंगा फोर्थ वर्ड में कुछ बात बताना। दूसरी दुनिया है, देखिए सेकेंड वर्ड सोशलिस्ट वर्ड। देखिए USSR प्लस ईस्टर्न यूरोप। पहली दुनिया कैपिटलिस्ट वर्ल्ड थी, दूसरी दुनिया सोशलिस्ट वर्ल्ड या कम्युनिस्ट वर्ल्ड बोल लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। तो दूसरी दुनिया क्लियर? गाना याद आ रहा है, दुनिया बनाने वाले हैं, किसी ने सुना है वो?
बहुत पुरानी सॉन्ग है, एक किताब है मैला आंचल, उस किताब के ऊपर वो मूवी बनी थी। उस मूवी का नाम क्या था? उस किताब उस मूवी का नाम क्या था? तीसरी कसम, आई थिंक। तीसरी कसम या तीसरी कुछ था। एनीवे, चल, दूसरी दुनिया समझ में आया? ये दूसरी दुनिया खत्म हो चुका है। दूसरी दुनिया कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर के साथ गायब हो गया। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड, the decolonized world, decolonized nation state of Asia, Africa and Latin America. नैम इसी में आता है, बिल्कुल नैम इसी में आता है, राइट? सो डीकोलोनाइज्ड वर्ल्ड, राइट? अब इंडिया भी डीकोलोनाइज्ड कंट्री में था, जिसने फ्रीडम पाई थी कॉलोनियल पावर से, राइट? इसको हम ग्लोबल साउथ भी बोलते हैं, ग्लोबल साउथ। ठीक है, ये आइडिया क्लियर है? फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। Sir, last one will include the 4 countries that were there for the formation of NAM, sir. I didn't get you. What do you want to ask? So in the last one that you have Third word. explained, sir, इसमें, हाँ, third word, it will include the 4 countries, major 4 countries that were there for the formation of NAM. yeah, it Yes. is. Yes. Okay, sir. Yes. नाम पढ़ाऊंगा आराम से। 4 कंट्री नहीं, 5 कंट्री थी, बट जब बनी तो मात्र 3 लोग थे, राइट? 5 कंट्री थी, खत्म करना है आराम से। थर्ड वर्ल्ड क्लियर है? मैं चौथे वर्ल्ड को डिफाइन करने के लिए 3 वर्ल्ड को डिफाइन किया, ताकि आपको चौथा वर्ड तो पता रहे, पर पहला, दूसरा, तीसरा क्या है वो नहीं पता। सिंस मैंने ग्लोबलाइजेशन का नाम लिया था इसलिए। अच्छा, फोर्थ वर्ड देखिए, फोर्थ वर्ड चौथी दुनिया कौन सी है? अच्छा, बिल्कुल, आपने इमैनुअल कैस्टल का नाम सुना है? नो डेवलपमेंट, इमैनुअल कैस्टल, he was a great sociologist from Latin America. No, sir. Sir, Immanuel Kant तो सुने हैं, मगर Immanuel Kant Immanuel Kant नहीं, Immanuel Castro. No, sir. No problem. The thing, you know, what is the consequences of globalization? आप लोग इतने लोग हैं, मुझे बता दीजिए अगर थोड़ा ग्लोबलाइजेशन पर, what is the consequence, major consequences of globalization? Please, Sabrina, yes. Games like Blue Whale. What kind of games, my God? Interaction between people to people. Yeah. Very good. Interaction between people to people. One of the consequences. Cyber attack modes also. Yes. Trade and commerce. That's fine. What? Economic disparity. Very good. Let's economic disparity. मेरा जो आ गया, मेरा टर्म आ गया, economic disparity, inequality. Economic inequality. Human rights is a part of that. You know,
Human right, of course, human right is part of that. Environmental degradation is also one of the consequences. But I'm concerned here with the fourth, to explain what is fourth wall. देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बाद इनइक्वालिटी बढ़ी है और वेल्थ भी बढ़ा है, राइट? कुछ कंट्रियां इतनी पावरफुल हो गई है, बट कुछ कंट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा गरीबी है। क्या यूनाइटेड स्टेट के अंदर गरीबी नहीं है? मुझे बताइए। क्या लंदन के अंदर गरीब नहीं है लोग? है लंदन के अंदर गरीब? क्या न्यूयॉर्क के अंदर गरीब नहीं है? ओके, ब्राजीलिया में, रियो में, अच्छा दिल्ली मुंबई में गरीबी है, स्लम, या राइट? हम जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वहां पे गेटो बोलते हैं। हैव यू हर्ड द टर्म गेटो? जहां पर ब्लैक लोग एक साथ रहते हैं, जहां पर गरीब लोग एक साथ रहते हैं, right? So the fourth world has created, you know, a global city. Sorry, one minute. The globalization has created a global city, right? And in that global city, like Delhi, Mumbai, London, New York, no, कहीं भी कोई भी सिटी का नाम ले ले, वहां पर यस, वहां पर दो ग्रुप है, एक है रिच, एक मिनट मुझे पढ़ा लेते उसके बाद, रिच, और दूसरा है पुअर, right? So you can find the poor in all country. The cemetery, shantytown, slum में रहने वाला, shantytown में रहने वाला, बहुत गरीब, उसके पास खाना तक भी नहीं है, right? होता है कार में रहते। यूएस में बहुत सारे शहर में लोग कार में ही रहते, उनके पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं, बस एक कार है और कुछ नहीं। वहां के गरीब भी यहाँ के मिडिल क्लास के टाइप रखते हैं। But the globalization has created the global city, where every part of the world, where there is a one world, जहाँ पर लोगों के पास इक्वल, लोगों के पास deprivation है, and there are different kind of deprivation. Yes, slum, right? So this world is called fourth world, the slum of world, slum world in the global city. इमैनुअल कैस्टल ने इसकी एक कॉन्सेप्ट दिया था, ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट। हाँ, यूएस में भी है, हर जगह, ऑल ग्लोबल सिटी एंड ऑल सिटी आर ग्लोबल। आप ढाका बात करना चाहते हो, अभी बात कर लो, फोन उठाओ, लगाओ गूगल टू, बात हो जाएगी ढाका से। आपके पास फोन होगा, कहाँ का फोन है? मेरे पास चाइना का फोन है, हमारी तो चाइना का है ना, राइट? हमारे चाइना का है, पता नहीं आपके पास साउथ कोरिया का होगा, किसी के पास अमेरिका यूएस का होगा, राइट? सो फोर्थ वर्ल्ड इज a kind of world that you can find in the global city, where the poor are marginal, their status is very, very bad basically, right? They live in a shantytown, they cannot access clean water, they barely access good food, right? And their standard of living is abysmally low. Did you get the idea? Yeah, what is the fourth word? Firoj. Yes, sir. What is the fourth word? Fourth world, sir, it is a kind of world which can be found in the global cities, sir, where the condition of poor is very bad and marginal, sir. Very good. Very good. Anyone who wants to explain more? No? So, first, second, third world बताने में, but did you get the idea? First world, second world, third world, and fourth world. Yeah, globalization मुझे पढ़ाना है,
मैं पढ़ा राइट, क्योंकि बहुत जरूरी है ग्लोबलाइजेशन को जानना। हाँ, ग्लोबलाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है पूरी दुनिया पे। हाँ, सेकंड जो पहली दुनिया है वो कैसे जा रही है, तीसरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट है, राइट। नए नए सेक्टर इमर्ज हुए हैं, राइट, लाइक टूरिज्म सेक्टर, राइट राइट। तो आप लोग टूरिज्म सेक्टर को बहुत लाइक करते होंगे, मन करता होगा चले जाएं। कहाँ कहाँ जाना है, राइट। बट दिस नए नए एमएनसीज आ गए हैं, एमएनसीज, टीएनसीज। आज लगता है मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, बट कल लिबरल पर्सपेक्टिव बता के मैं बैलेंस ऑफ पावर, उसके बाद 2-3 क्लास में आपके जो बेसिक्स हैं वो खत्म करके फिर मैं रिलेशनशिप में आता हूँ। मतलब अपने रिलेशनशिप में नहीं, फॉरेन पॉलिसी की जो रिलेशनशिप है इंडिया और राइट, मैं ऑलरेडी हूँ, ठीक है। पर आप लोग अपना बताना चाहेंगे तो most welcome, but if you want to be silent then also most welcome. राइट, सो आज का क्लास थी कैसा रहा, समझ में आया नहीं आया, क्या प्रॉब्लम रही, जब तक आप मुझे बोलेंगे नहीं तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि बस डब्बा गोल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा प्रिंस, रहने दो, ठीक है। रहने दो बाबू, रहने दो, ठीक है। सर हाँ, क्या हो गया सर? मैं बोला रहने दो, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, कोई नहीं बताना चाहता, एनीवे। Firoz, did you get the idea? Yes, sir. Anything? That, Yes, sir. एक doubt था सर, हाँ, ये बोलो। फर्स्ट फोर्थ सेकंड वर्ड थर्ड फोर्थ, इसका मीनिंग बता देंगे सर? ये क्या है, मतलब किस बेसिस पे? ये थोड़ा समझा नहीं। सॉरी मीनिंग मतलब सर जो ये फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड फोर्थ वर्ड, इनका मीनिंग क्या है सर, मतलब किस बेसिस ये पे? कैटेगराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम बोलते कि इम्पैक्ट ऑन थर्ड वर्ल्ड, व्हाट इज क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन थर्ड वर्ल्ड। ये कैटेगराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ये है। ओके सर, ठीक है। यस सर, यस सर। यस हरिणी, am I clear? Anything? Yes, Aminu? Okay. So, हाँ. So we discussed about realism, sir. So in mains exam, it will be coming direct question, or we have to take the reference of these topics. जब हम आगे थोड़ा 360 डिग्री में घूम जाएंगे तब बताऊंगा, अभी इनिशियल है, ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ बस उसको रखिए। जब हम एक बार घूम जाएंगे ना सर्कल को, फिर मजा आएगा, राइट। बाद में पता चलेगा जब हम एक्सप्लेन करेंगे। यस प्रिंस, प्रिया, विपुल, आप लोग मुझे बताएं सब ओके है, सब क्लियर है? यस सर, यस प्रिया सर, बस वो अगर करवा देते थोड़ी हेल्प तो बस हो जाता। क्या वो कैसे आते हैं कोई बता देता तो। क्या आते हैं कोई कैसे? वो मैंने लिखा था ना कैसे आते हैं। हाँ, तुम अभी तक सीखा नहीं है क्या? नहीं सर। या गोली दे रहे हो मुझे? नहीं सर। हाँ, Sir, by the way, for your kind information, I am engaged. Oh, very congratulations. देखो अभी तक छुपा रहा था। हाँ, congratulations. Yes, बहुत खिलाड़ी पक्का, बहुत ज्यादा बड़ा वाला खिलाड़ी है। Anyway, say congratulations to Prince and see you not on Monday, on Tuesday, right? On Monday I have some work, so I'll not take your class. On Tuesday, on Tuesday we will meet and discuss further. Okay?
सर So, प्रिंस की सिर्फ एक ही रियासत नहीं है, और भी रियासतें हैं। बहुत रियासतें, हाँ होता है, वो नाम ही प्रिंस है उसका, नाम तो यस देखो। सर, तभी तो रियासतें बहुत है इनकी। बहुत सारी रियासतें हैं। हाँ, तो रंगीला का नाम सुना है? तो मुगल कौन सा रंगीला था ना, एक हाँ मुगल रूलर था, यस, क्या नाम है उस मुगल रूलर का? शाह रंगीला नाम था शायद, यस, मोहम्मद रंगीला। आई एम वेरी बैड इन हिस्ट्री, but anyway, see you then on Monday. Bye bye for ठीक है, चलो बाय, मोस्ट वेलकम टू एवरीवन।